Today's episode is all about learning from someone else's story because we all have some story. हम सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी स्टोरी जी रहे हैं और अपनी स्टोरी से सब कुछ सीख पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें दूसरों की स्टोरी से हम जितना कुछ सीख सके तो हम अपनी गलतियों को कम से कम कर पाते हैं। आज मेरे साथ हैं राहुल अग्रवाल जो कि एसबीआई पीओ थे। इंजीनियरिंग करने के बाद एसबीआई पीओ ज्वाइन किया उन्होंने और एमबीए करने के बाद he left SBI after 4 years and he joined private sector. So today he'll be sharing his story and we'll learn a lot from his story. So thank you, Rahul, for coming on my channel to share your Yeah, thank you, story. Soumya. Yeah, And yeah, thank you're my you. first guest on my channel. So that first is always very special. And so your being on my channel is something very special to me. So Yeah, thank before you for I that. start, Rahul, I would like to know about your childhood. What were your dreams? What you wanted to do? Because childhood dreams are something which we always leave behind, and we do what society want us to do. So what was your dream growing up? Sure, Soumya. Yeah, so first, thank you for this opportunity. And just for your audience, I actually pinned Soumya first for this because my whole intention was that I have seen so much confusion among people currently in the bank that I know how the banking service is. I have gone through this, but today is a worse time. I have seen through various YouTube videos. So I wanted to give some guidance to them. So the sole purpose. So I contacted Soumya and she very eagerly agreed to it. I'm very thankful to her. Now to your question, Soumya, yes. So I had a very normal childhood, like any other kid of my age, grown up in the 90s, watching DuckTales, Tailspin, and my father was a central government employee. He retired about 15 years back, and I have traveled through the country, stayed in Chennai, stayed in Kanpur. And my father, being a central government employee and a senior central government employee, naturally got me attracted towards government service. I have two siblings, twin sisters, elder to me. By chance, they were never attracted to it, but I got attracted to it. Maybe it's a biological thing, male following the male, I don't know. But I don't want my son to follow me, that is for sure. So, but I had started preparing for IAS. My sole purpose was civil services. I had dreamt of IAS since school days. I used to read competition success review all the time from 6th to 12th, and I think that helped me improve my aptitude. So by chance in the third year when everybody was preparing for MBA, sorry, in the fourth year when everybody was preparing for MBA and I was preparing for civil service, and due to my parents' pressure that you also should give CAT, I gave CAT, I got 95 percentile. So I didn't prepare That's anything of it. Just because I have was doing aptitude for so many years, reading competition success review. But my sole purpose was civil services. Cutting it short, I gave three attempts. Two times I cleared the prelims and I could not clear the mains. And by that, I had also joined SPI as probationary officer. I am a batch of 2010. We guys got our joining in March 2011. I took the Maharashtra circle. So I have traveled in Maharashtra all through my 4 years of SPI experience. Apart from that, I would say that engineering was just like any other engineering, which my colleagues have gone through who are of my generation. But my sole focus was totally IAS. Even in SBI, I was preparing for IAS. Yes, that's it. Yeah. सो एज यू टोल्ड कि आप अलग अलग शहर में बड़े हुए हैं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इवन एसबीआई में रहने के बाद, एसबीआई छोड़ने के बाद? मुझे मतलब बिकॉज आई ट्रैवल्ड व्हेन आई जॉइंड बैंक, उससे पहले मेरा बचपन पूरा एक शहर में बीता है, बट यू हैव ग्रोन अप इन डिफरेंट सिटीज। सो हाउ इट इम्पैक्टेड योर पर्सनालिटी? It impacted my personality that I became very flexible. I was not constrained by कि लोग को कैसे दोस्त बनाना है, लोग कैसे दुश्मन बन जाते हैं.
as I grew up, grew more mature, but I developed the ability of making friends. Means if some people who did not, because I studied in Kendra Vidyalayas all throughout my life because of the central government job. So some people of my class who did not have a transferable job of their parents, they used to ask me, how do you make friends at new places? Because for them, they are just sitting there and other people are coming to make them friends. So I don't know, means you get that ability. Yeah. But in SBI, it's a different thing because when I was with my father, it means we would get a quarter. There we should will be a township of a central government employee. So it's a very different thing compared to a bank employee. So a bank employee, we don't have townships other than major places like Nagpur and Mumbai. I have never lived in metro. I have only stayed in Pune for 1 year, and apart from that, I have worked in semi-urban and rural areas. My last posting was near a village only, and maybe that motivated me to work harder and leave the bank. But I had given my full during the SBI. After I left the branch, and whenever I met my old colleagues, they used to say, nobody has ever worked that hard like you did. So I have heard from two, three branches. I have worked very hard. I means I liked banking, I would say. I didn't dislike banking. Means I liked the thing is banking was not a very tough job and I liked what I was doing. So I was clear one thing in my mind that when I leave the bank, I would want to stay in the same BFSI sector. The BFSI was good. And that is why I did my MBA in finance. I like all these numbers, interest rates, everything. So I was quite clear in that aspect. Now tell me, you wanted to be IAS officer, then why engineering? Why you chose to Because do engineering? I mean, if someone wants to go to, I mean, do UPSC, then what was your motivation to do engineering? the motivation was that there was nothing else to do. That is the issue of growing up in India at that time. Right. Means even if I was in America, then the opportunities would have been vast. But you should not dislike the place where you are born and brought up. You should take the opportunities what is thrown. So I always I'll just answer this question by telling some things which I tell to my colleagues who want to migrate to foreign countries, and they say that India is bad. I want to migrate. It's okay. Just go with the principle you are going to a better country from a good country. If you're Correct. going to America, yes. See, you are not Somalia. Somalia will never. India has some opportunities. We don't have some. We have problems. So if you're going to America, yes, congratulations. But always go with the thinking that you're going to a better country, but you're going from a good country. And that is the attitude actually which has helped me throughout my life. So like when I came from SBI, when I went to SBI, and after under the protective environment which my family provided, I always said I was good. I am going into a better thing, and that is why I never gone to any foreign country. Of course, there are family obligations. I did not go for a foreign thing in the private sector. But this is how would I answer your question that we take the opportunities what the country has given and then we move forward. Now, see, you did your engineering. You wanted to go into UPSC. Then how you came to back? I mean, Again, how has yeah, yeah. SBI happened? Mean, I can understand this that just say your father was in central government, you Mhm. were inclined towards central government job. So how SBI happened? Sure. SBI happened because I needed something to come into my account. That's all. My father was going to Okay. retire. I still remember that I gave one PNB exam, PO exam, prelims. I could not clear. I just missed by some marks the quantitative aptitude. That was in 2009. And suddenly, my father's last posting was in Calcutta. So, Kolkata, please don't mind. Okay. Calcutta, I say sometimes. So, people who like Kolkata, please don't say. So, I remember 25th January was the last day of filling a SBI form. And that time, there was no online forms. You had to go to a branch and fill some voucher.
So I went to that Alipur SBI branch. I just filled it. I did not even ask my father. But I thought, okay, it is the same syllabus. By chance, I cleared every round. I got selected in the interview. I think there is no mains and prelims during that time. There was only one exam, and I Okay. got a call for the interview. And then my father told, take this, go join this firm. Don't worry about There were no two IS. exams. I mean, I got selected in 2009, but I had both the exams, prelims as well as mains. And then As far we as I had remember, I don't GDPI. think so. Yeah, GDPI was there, but I think I only gave one exam. Okay, I Uh, gave two yeah. exams. I got selected Okay. just 1 year before you. So maybe, Maybe because yeah, I it don't keeps on remember changing. actually. It keeps on changing. Yeah. So what were the And skills that you gained which helped you to move out of SBI? Skills that you mm, gained and what you think that you should have gained while working in SBI, because SBI is such a large organization, and in SBI you are doing kind of everything you can do in a bank. So what were the skills you learned and what were the skills that you wanted to learn? so if you are asking me relevant skills for the job which I'm doing, very less. Okay. Which I learned in SPI. Very less. The IT world, I'm actually not a technical person. India and every industry called the IT world, but it's a technical world in which fintech, in which business analysts are there, product management is there. So I joined that part of the industry, and it really didn't help. One of the factors is the world which currently I work in or joined at that time is vastly different from the customer centric, which is in SBI. Right. In SBI, the branch is the whole thing. Nothing is outside the branch. All your customers, all your loans, everything happens. Yes, you're connected to your regional office, but your client side is totally in the branch. Here in this world, your client side may be sitting in Chicago, maybe sitting in New York, maybe sitting in London, and you're dealing with people who have not seen your face. You haven't seen their faces, dealing with people who are of different nationality. So I would say the skills in SPI I gained were less compared to the industry which I required in my current industry. But I would say with the caveat ki this will not be true for other industries. Like if you are going from SBI to some customer centric job, maybe that would be benefiting, but not in my world, which I'm currently So, what was your triggering point when you decided that I have to leave bank? And I mean, what were the things you planned? I mean, in. just before leaving the bank, was there anything जो ऐसे दिमाग में हो कि मुझे ये चीजें कर लेनी चाहिए या मुझे ये skills सीख लेने चाहिए before I leave the bank? So what was Sure. your thought process, the triggering point, and what planning you did before Sure. you left? So I think it's a long question, so a long answer is required. So I'll be very frank that why I left the bank. So I think, and the reasons which I have are the reasons which are similar to 99% of the people. I don't have any extraordinary reason. See, my colleagues given into companies, private companies. Okay. So, it was during, I'm not sure whether the current generation remembers, but in 2008, there was a worldwide recession and the private sector jobs were badly hit. So the banks were quite attractive. So I got placed into L&T Infotech from college, but they didn't give the joining for 2 years. Okay, But in between, I had joined the SBI. So that was the state of the private sector that time, basically the right, technical technology industry. So by 11, 12 also, the industry had started coming up, but still it was bad. People right. were still leaving Infosys for SBI and everything. But in 2013, 14, it had come to a good leg. And the people who were earlier asking me how to get out, my salary is not increasing, several colleagues, they were suddenly going to America and Europe. And they are still there. They're still there. So actually, that hit me hard. Means I thought that what I'm doing here then? These are the same guys who did not get placement.
during my college. I got the first placement, first company. And it all depends on the choices which you make. Skills matter, but also it depends on the choice. तो मैंने choice Exactly. दिया था एसबीआई करने का, अच्छा choice था, but can I live with this? I don't think so. Then in 2013-14, I got placed into a far-flung area. That was the area was good. The people were really good. I still say that is the best branch which I have worked. That is Vani, which is near Chandrapur in Maharashtra. I would still say the best people who have worked in SBI is Vani. But the area was quite rural, and I didn't see much future. I was becoming a very forward thinker. What would happen when I get married? My wife would be living far. Can I live with like that? Oh, I would be seeing my child once in 2 weeks in the future after 7, 8 years. So all these thoughts were coming in my head. And then the salary was also, it will increase our settlements, as we know, means we know that. So I was thinking that, okay, I can't blame my fate, I can't blame my everything if I don't have the opportunity now. The other thing was, I was less than 30. And in the private sector, if you don't get inside at the right time, the doors will be closed after that. It's very difficult to get inside after 35. So I decided to do that. I have to make a plan and get out of this. I've searched many things. Can I go directly to a private job? I found that it's worse if I directly go because whoever will take a sales job. Then I sort of doing CFA, but CFA alone would take 4 years. And what happens after that? So after that, I decided I will do MBA, and I think that I made a correct choice. Now I didn't want to do a 2 year MBA because uh, I thought that maybe it will waste some of my time, and I was getting older. I will be 30 in some 3, 4 years. So I decided to go for a 1 year MBA. 1 year MBA is not an executive MBA, it's a full-time MBA. So I studied in Great Lakes, Chennai. For that, I prepared for GMAT. I prepared for GMAT sitting in the rural area. I used to wake up at 8 o'clock. I used to go drink tea and I started preparing. And I my branch used to start from 10:30. So till 10 o'clock I used to prepare, and the branch was very nearby because 5 minute walk. You live in a very small area. So 5 minute walk. And then I used to come back at 8, 8:30, then eating dinner, and then 1, 2 hours of study. And I used to have a dongle that time, means there was no broadband. So I used to there were no notes. When I went to Pune once in 2, 3 weeks, I used to buy books and come back and study like that. So I studied my GMAT there, and I got enough good score that I went into Great Lakes, Chennai, and that changed my life. And how was your MBA journey? I mean, जो क्लास में पढ़ाई होता है, that is something जो अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट, पता नहीं, बिकॉज इंटरनेट पे सारे ज्ञान आपको मिल सकते हैं. So, I mean, what MBA gives you, which prepares you for private sector? मतलब आपके एक्सपीरियंस है, what you felt कि आपको MBA करके मिला. So, नॉट जस्ट द नॉलेज, मतलब yeah, मैं सिर्फ बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल स्किल्स दैट यू गेन फ्रॉम योर MBA. sure. So, Soumya, I would say the world is very different when I joined MP in 2015 and in 2026. So, what I got in MBA was vast, vast treasure. I got really good people who were quite intelligent. I got really good friends, people who are in current scenario are placed at very good places. And uh, the networking was really good. The professors were fantastic. My engineering was done from a tier 2, tier 3 college, but in my MBA was done from a fantastic college. The professors are highly educated. They taught us very good concepts. I still have those books of my MBA. So the skills I got were vast. And the thing was, the Great Lake Chennai has a very good reputation also. So in the private sector. So I got a good placement from there in Deloitte, and I was very happy.
So, and to your second question of relevance of MBA, again, the world is very different. There was no buzzword of AI during that time. Now, I understand that Nikhil Kamath has said that MBA. I actually could not understand what he was referring to, whether he was saying that MBA before experience is bad or MBA after experience is bad. Now, I assume from his statement that he was saying MBA before experience is bad. I would agree to his statement that MBA before experience is not that good. Means it's better to, but the problem is Indian industry. Means the industry also has to change, and they won't take a MBA after 5, 6 years of experience. But Right. that is why people go for earlier MBAs. But I would concur with his statement if he has made an assumption that MBA before experience is bad, and I agree. Once you get some working experience and then do MBA, your outlook of learning the MBA would be vastly different from what you will learn during MBA. So a lot of people in MBA were not working, not listening to any lecture. They were just came for the name and the placement like that. But I actually was 4 years experience, and I learned a lot because I knew that what there was a difference between 4 years of experience and 1 or 2 years of experience. So I would say that there should be a normal thing that after 5, 6 years of experience only you should get into MBA. The industry also has to change. Our industry is not that mature, private industry. So I would accept that argument. And what are the skills? I mean, can you name those skills जो आपने actually MBA में सीखा and you are actually using them in your daily work या फिर जैसे आप job switch करते रहे. So what were the Mm. skills जो आपको help करती रही to switch jobs and to get paid higher amount after Yeah. every switch? So name those skills जो अभी लोगों को जैसे अभी जो हमारे ऑडियंस है बहुत सारे लोग 25 to 35 के बीच में हैं तो कौन से स्किल्स सीखने जरूरी होते हैं? ठीक। एमबीए में आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ कि मैं किस पे अच्छा था। ये बहुत बड़ा स्किल है कि वो यू आर गुड एट विच मेजर, यू आर गुड एट ऑपरेशंस, यू आर गुड एट मार्केटिंग और finance. So I was good at finance, so this I discovered. Secondly, it improves our communication a lot, how to talk to people. And thirdly, what it improves is it gives you a grasp of the real world. See, books can, yes, you learn, like in finance, you major. Now, what is financial accounting? Means people like me in bank doesn't have the time to give training, but I understood financial accounting in MBA. Then you understand different methods of operations. Now, all these things help as you go forward in your life. Like if you are doing in product management right now, okay. Now, product manager interview is asking the same concept what you learned in MBA. Immediately, it may not have been useful, but the thing is, MBA education may not be immediately useful in placements. But after 5, 6 years, you will find that what you learned in MBA was quite useful now. So my college gave me some tools training also. That is important now. They gave a training for R language. Now a lot of people didn't went to R language, but some institutes give training in SQL. Some institutes give training in Excel. Now immediately it may not be used, but after 5, 6 years you will be just using that. So Right. immediately, so you have to keep on learning yourself. And then now if I sit in this chair and remember, yes, if I means professors, what they taught is being relevant now. But that is how life is. We learn lessons and then we apply later. एंड लाइक आपने बताया एसक्यूएल आर ये आपने सीखा क्या कोई प्राइवेट सेक्टर से जैसे मैं दो सिनेरियो लेती हूँ एक ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं फॉर बैंक्स मे बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अगर उन्होंने बहुत साल लगा दिए हैं ऑलरेडी दे आर प्रिपेयरिंग Mhm. नहीं हो रहा सिलेक्शन नाउ दे वांट टू गो इनटू प्राइवेट सेक्टर कि प्राइवेट Mhm. बैंक्स के लिए ट्राई करें तो कौन से ऐसे हार्ड स्किल्स हैं कौन से ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो वो सीख Mhm. सकते हैं मतलब नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड एमबीए वो कौन से ऐसे स्किल्स हो सकते हैं जो वो
स्किल सीख ले तो शायद उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए, या और कौन से ऐसे कोर्सेज है जो कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीए, अगर कोई ऑलरेडी बैंक में है एंड दे वांट टू टेक द स्लीप, देन व्हाट आर हम्म। अदर स्किल्स अपार्ट फ्रॉम एमबीए दैट दे कैन डू टू टेक द स्लीप? या सो चीज़ें बहुत चेंज हो गई है एआई आने से। इट हैज़ मेड थिंग्स इजियर एंड इट हैड मेड थिंग्स डिफिकल्ट। पीपल हु आर ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री एंड पीपल हु आर नॉट इन द इंडस्ट्री के बीच का गैप कम हो गया है, आई वुड से। नाउ आई हैव लर्नड एसक्यूएल, आई हैव वर्कड वेरी हार्ड। People have learned Python, people have learned R, people have learned Excel, all these tools and different। एआई आने से इन चीज़ों का हैंड्स ऑन स्किलिंग की इम्पोर्टेंस कम हो गई है हमें। आपको बताता हूँ, अब पाइथन करते हैं हम जुपिटर नोटबुक पे, एनाकोंडा नेविगेटर। राइट। Now, 2 3 years ago, I used to practice, and my wife is really good at Python, so I used to ask her for doubts when error correction वगैरह। Now I don't need her। वहां पे एक साइड में एक AI टूल है which will actually improve your code, which will tell you the correct code। Now you don't need to means you can buy the I have bought 11th and 12th CBSE Smith Aurora books to learn Python, computer science। They are really good if you want to learn Python। आप उसको उठाओ, एनाकोंडा जुपिटर फ्री सॉफ्टवेयर है, इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। their AI tool is really good। I just put the code and if there is an error, you just ask the AI tool which is on the sidebar, और वो आपको बता देगा, वो सही कोड भी दे देगा और आपको एक्सप्लेन भी कर देगा। नहीं होता तो चैट जीपीटी पे डाल दो। तो सीखने के बहुत तरीके हैं। सेम विद एसक्यूएल। एसक्यूएल का कोई कोड नहीं चलता तो मैं अब किसी से नहीं पूछता। माय वाइफ अगेन इज वेरी गुड एट एसक्यूएल। पहले मैं उसी से पूछता था, अब मैं क्या करता हूँ, कोड डालता हूँ, कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी पे डालता हूँ, इमीडिएटली बता देता है कि एरर है और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो राइट नाउ मच फास्टर। ऑफ कोर्स यू शुड बी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड, बट अब वो प्रॉब्लम्स नहीं है स्किल सीखने में। आप ये एसक्यूएल सीखो, आप पाइथन सीखो, आप एक्सेल सीखो। एक्सेल में को पायलट आ गया है, आप को पायलट सीखो। को पायलट से आप पीपीटी बना दोगे तो आपकी इंडस्ट्री में आज तक कोई पीपीटी डिजाइन करता होगा। देर आर सेवरल पोस्ट इन एवरी कंपनी विच एक्चुअली मेक पीपीटीज। राइट। आप को पायलट सीख लो, आप उनके बराबर आ जाओगे 6 महीने में, जो सालों से वो काम कर रहे हैं। राइट। पावर पॉइंट का को पायलट सीख लो, फिर एक्सेल आप सीख लो। एक्सेल एक्सेल में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट और एसक्यूएल पाइथन में भी टाइम लग सकता है, पर एआई टूल्स ने आपका गैप बहुत कम कर दिया है। आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ो। मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा हूँ आजकल क्योंकि मुझे डेटा साइंस में वो करना है। बहुत अच्छी बुक्स है मार्केट में। स्टैटिस्टिक्स विदाउट टीयर्स, रिटन बाय अ फॉरेन ऑथर, बहुत अच्छी तरह बताता है। एनसीईआरटी की बुक्स से रेलिवेंट कुछ जैसे कुछ अच्छे ऑथर्स की बुक ले लो आप। सीबीएसई की बुक्स, नॉन नॉन एनसीईआरटीज आर वेरी गुड। एनसीईआरटी को लेके जो बनाई है बहुत अच्छी हैं, आपको सारा 11 बेसिक 12th की स्टैटिक। stats। बहुत अच्छी बुक है आई मीन मतलब। यू आर टॉकिंग अबाउट कि एनसीईआरटी की या जो भी नॉन सीबीएसई एनसीईआरटी, की, वो 11 हाँ। 12th लेवल? हाँ नॉन एनसीईआरटी मतलब जैसे सुमिता अरोड़ा ने एनसीईआरटी के बेसिस पे अपना बुक लिखा, वैसी कोई ऑथर की आप चूज कर लो। आईसीएसई बोर्ड की चूज कर लो। दे आर वेरी गुड बुक्स। स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, पाइथन सीखो। आपको आप इतना डेटा साइंस करने लग जाओगे, यू कैन बीट 90% पीपल इन द इंडस्ट्री। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का वो जो एक एक्सेल में एक वो है मॉड्यूल, आप एनालाइज करोगे और एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगर आपने वेरिएबल डाल दी और बोलोगे इसके मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दो, और उसमें एक लंबा सा टेबल आता है, पी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है। इन द इंडस्ट्री 90% ऑफ द पीपल कैन नॉट एक्सप्लेन दैट हु आर इन डेटा साइंस, बिकॉज वो नहीं, क्योंकि सबने जॉब के अकॉर्डिंग पढ़ा है। हम्म। रिग्रेशन क्या होता है सबको पता है, पर वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो 10 15 थिंग्स आती हैं वो नहीं बता पाएंगे। आप वो पढ़ो। ऑफ कोर्स जॉब कैसे मिलेगी, तो जॉब के लिए तो देखिए अप्लाई करते रहो, बट अगर आपको स्किल सीखनी है, द गैप इज वेरी रिड्यूस टू वोट हु पीपल आर करेंटली इन द इंडस्ट्री। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट लाइक बिफोर।
सो वी वर टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिसिस। टेल मी वन थिंग कि क्या एआई आने से डेटा एनालिसिस का रोल खत्म हो जाएगा विद इन 2-3 इयर्स? बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब एआई कर सकती हैं। सेकेंड इज कि केवल डेटा एनालिसिस नहीं, मुझे लगता है बैंकर्स बहुत सारे ऐसे फील्ड में जा सकते हैं विदाउट डूइंग एन एमबीए, लाइक डूइंग एफआरएम, सीएफए, या फिर हैविंग करेक्ट। बैकग्राउंड ऑफ क्रेडिट। अगर उनके पास क्रेडिट का बैकग्राउंड है तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके की पर्सनालिटी को क्या चीज सूट करती है। और अपार्ट फ्रॉम एमबीए, अगर कोई एमबीए अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑल्दो 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस के बाद दे कैन स्टिल टेक अ लोन। एंड अगर कोई ए लिस्टेड एमबीए कॉलेज में जाता है तो विदाउट कोलैटरल दे गेट लोन, तो लोन भी उतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। Apart from MBA, what are other qualifications which they can have and which is good to have to take a leap from SBI or any public sector job? सो आई जस्ट टेक इट एज कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बैंक आपको नॉलेज देता है वो काफ़ी नहीं है। ये आप मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। बैंक डज नॉट प्रिपेयर यू फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। इट्स नॉट द बैंक्स फॉल्ट। बैंक का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। उन्होंने आपको पहली ज्वाइनिंग करने से पहले ही आपको पता है ब्रांच में क्या काम होता है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट। वंस यू आर इन द बैंक एंड यू वांट टू गो टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यू आर good for not many things in the to earn good money. Okay? क्योंकि वो स्किल्स नहीं है। स्किल्स इज अबाउट टूलिंग। हमारे पास तो सारे टूल्स होते हैं, कोर बैंकिंग है, लोन के लिए है, तो वो तो आपने टूल्स बनाए नहीं हैं, उसमें तो आप डेटा इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन इंटरेक्शन ही होता रहता है, बस कैश वगैरह करो। ऑफिसर के लिए कोई एप्लीकेशन आई तो एप्लीकेशन बेल के लिए पूरे जो बड़े एप्लीकेशन है वो कमेटी देखती है रीजनल ऑफिस में, आपको छोटे मोटे लोन आते रहते हैं। तो देर आर नॉट मेनी स्किल्स। अब डेटा एनालिस्ट की आपने बात करी। हाँ, बहुत सारे रोल्स एआई की वजह से खत्म होंगे। टेस्टिंग का रोल बहुत खत्म होगा। अभी आईटी वर्ल्ड में टेस्टिंग बहुत चलता है। 4-5 years में बहुत टेस्टिंग वालों का बहुत नुकसान होने वाला है, हु डू नॉट अपग्रेड फ्रॉम द नॉर्मल टेस्टिंग व्हाट दे आर डूइंग, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग। सो लॉट ऑफ थिंग्स एआई विल टेक ओवर। डेटा एनालिस्ट भी इसी तरह है। बट देर विल ऑलवेज बी ए नीड ऑफ दिस रोल्स, बट इनका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब डेटा एनालिसिस किस चीज़ का डेटा एनालिसिस, इट विल बिकम यूजिंग द एआई टूल का डेटा एनालिसिस भी हो सकता है। एआई को यूज करके आपको डेटा एनालिसिस करना है, ऐसा आ जाएगा। टेस्टिंग आपको एआई टूल यूज करके करनी है। सो दीज थिंग्स विल चेंज। अब कितने लोगों की जॉब्स, मेरे ख्याल से जॉब्स इंक्रीज होंगी 5-6 साल, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के साथ यही होता है कि बाद में जाके जॉब्स बहुत इंक्रीज होती हैं। तो इसके साथ भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि बजवर्ड बहुत होता है, पर बजवर्ड आई डोंट नो, मे बी दिस अ डिफरेंट टाइम, बट वी विल नो इन 2030। नाउ अब आप बोलते हैं एफ आर एम सी एफ ए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस। एमबीए जरूरी नहीं है, बट अगेन आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। आपको सेल करना होगा अपने आप को, वो आपको सीखना पड़ेगा। आपको कैसे सेल करोगे? ओके, आप एफ आर एम से आप क्या सीखना चाहते हो? एफ आर एम तो बहुत वाइड एग्जाम है। मैंने एफ आर एम करने की कोशिश की, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि द थिंग्स विच आई नीडेड फ्रॉम एफ आर एम आर लेस देन 1%। सॉरी, द थिंग्स आई नीडेड इन जॉब आर लेस देन 1% इन एफ आर एम। क्योंकि ऐसे एग्जाम सी एफ ए भी आप पढ़ेंगे तो जो आप जॉब में करेंगे दैट विल बी 1-2%। बिकॉज देर आर जो सी एफ ए तो एक पूरा एक कोर्स पढ़ाता है, पर वो पूरा फाइनेंस इंडस्ट्री पढ़ाता है। पर आप तो फाइनेंस इंडस्ट्री का 1 आउट ऑफ 1000 होंगे। तो एक सी एफ ए का जो कोर्स है उसको करने के लिए हजारों लोग हैं, तो आप उसमें से 1% पे काम करोगे। नाउ आप ये जरूर कर सकते हो, पर आपको एक कैसे सेल करोगे, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे? आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए लाइनेक्स पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो। आप क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में जा सकते हो, मार्केट रिस्क मॉडलिंग में जा सकते हो। उसके लिए आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, वार पढ़ना पड़ेगा आपको, कॉन्फिडेंस इंटरवल, एवरीथिंग, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। देन आपको उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करना आना पड़ेगा। आपको ग्राफ्स वगैरह सब समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप इस इंडस्ट्री में कदम रख सकते हो। And तो one more thing, sorry I'm interrupting it in between. जैसे यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए ये टेक्निकल चीजें सीखना कितना डिफिकल्ट होता है। आई हैव कोई लर्न डिफरेंस नहीं। एसक्यूएल एंड कोई डिफरेंस। सम ऑफ दीज थिंग्स, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं होता बहुत ज्यादा।
मतलब आई एम नॉट वेरी इंक्लाइंड टू। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई, आप बराबर हो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के। वंस ओके, एंड एजुकेशन कंपनी विल नॉट इस मैटर। चीज को इस चीज को लेकर के दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि आप इंजीनियरिंग नॉट एट ऑल। बैकग्राउंड से या टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, यू हैव लर्नड। आप किसी भी मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट से भी अगर आप करके स्विच करना चाहते हो, दे कैन डू दिस। बिल्कुल, और आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप लोग अगर एसबीआई में आए, 3 साल में आप लोग बराबर, को ओके। 3 साल में, इफ एनीबडी, हाँ, इफ अ पर्सन कमिंग फ्रॉम कोडिंग बैकग्राउंड, देखिए उसके कोडिंग का कुछ कंसेप्ट होंगे जो उसके बैठ गए हैं। हम्म। आपको, पर आपको वो कोडिंग कंसेप्ट बनाने में 6 महीने लगेंगे। तो अगर आप 3 साल बाद दोनों छोड़ना चाहते हो, वो आपसे 6 महीने आगे है, पर आप अगर उससे ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप उसको गैप कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब जॉब लेने में दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ आपको स्किल लेना है एंड यू हैव टू प्रॉपरली सेल हम्म, योर सेल्फ कि मुझे ये स्किल आता है एंड आई कैन वर्क ऑन दिस बिल्कुल। प्रोजेक्ट, या इस काम पर मैं बिल्कुल। काम कर सकता हूँ। अब किसी ने पाइथन पे 1 साल काम किया हो, वो बैंक में आ गया हो, उसने उधर पाइथन कुछ काम नहीं किया हो, आपने बैंक में रहते पाइथन सीख लो, आप उससे आगे हो गए। ओके। आप अगर नॉन टेक्निकल से आते हो। बिकॉज आपकी बैंकिंग नॉलेज भी कुछ हो जाती है। और द थिंग इज, आपने जो रिसेंटली काम किया 3 साल पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत कम लोगों को याद रहती सो माय क्वेश्चन इज कि बैंकिंग इंडस्ट्री में मतलब कौन से ऐसे रोल्स हैं, अगर कोई बैंक में है। ही हाँ, है अपने प्रोफाइल को बेटर करना चाहता है, तो कौन से ऐसे रोल्स हैं जो कि बहुत इन डिमांड होते हैं, और कौन से ऐसे रोल्स हैं जिन मतलब जहां सैलरी अच्छी मिल सकती है। हाई बिल्कुल। पेइंग जॉब्स कौन सी होती हैं विद इन द बैंकिंग सेक्टर। Again, the world which I have joined 10 years ago and today is very different. I joined in a time where there was not much knowledge needed. I remember I went to Society General Company after Deloitte without having any knowledge of Basel, credit risk, liquidity risk. I learned there. आज वो चांस नहीं है। आप आज इंडस्ट्री एंटर नहीं कर पाओगे अगर आपको इसकी नॉलेज ना हो। आई हैव वर्कड इन रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, बासेल, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क फॉर द पास्ट 10 years। मैंने इंडस्ट्री तब एंटर की थी जब ये जब इसमें बस लोग चाहिए थे बीएफएसआई बैकग्राउंड से, और काम करते करते और नॉलेज गेन कर, आज मैं बोल सकता हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में। उस समय मुझे पता भी नहीं था जब मैं इंटरव्यू देने गया था कि एक्चुअली ये है क्या। उनको बस चाहिए थे लोग बीएफएसआई से, और ही कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए थी, सो आई जॉब इट। And they asked me some question related to SBI. How do you do loans? What do you see credit risk? So that was easy to answer. Today, you cannot enter without the knowledge of what you are working. Credit risk. What is credit risk? What is PD? What is LGD? What is exposure at default? Then how will you calculate it? How will you calculate the confidence interval? What are the different Basel regulations? इसको जाने बिना आप इंडस्ट्री एंटर नहीं कर सकते। ये आपको प्री नॉलेज लेनी पड़ेगी। And then you can enter roles of business analyst is just a normal term. There are many roles just like this in which you implement your non-technical domain knowledge. डोमेन नॉलेज एंटर करके आप बहुत अच्छे रोल्स पास कर सकते हो। आप टेक्निकल लैंग आप साथ साथ कोडिंग भी सीखो, तो आपका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा विच विल एआई कैनॉट सरपास। तो डोमेन नॉलेज, हम जैसे लोगों को डोमेन नॉलेज पे बहुत वर्क करना चाहिए और साइड बाय साइड कोडिंग सीखनी चाहिए। ओके। तो डोमेन नॉलेज पढ़ते रहो, बासिल, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, वन एग्जांपल मार्केट रिस्क, कैसे क्रेडिट रिस्क फैक्टर्स कैलकुलेट हो रहे हैं, कैसे मार्केट रिस्क के ग्राफ्स बनते हैं, सब बनाओ। बैंक में रहते रहते सब नॉलेज गेन करो। एफआरएम भी कर लो। यू कैन डू एफआरएम वाइल स्टेइंग इन द बैंक, डोंट डू आफ्टर कमिंग फ्रॉम द बैंक। आई नो इतना ही, पर उस समय डिग्री हासिल कर लो, एफआरएम लेवल 1 भी कर लो, लेवल 2 कर लो, उसके बाद आप निकलो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, पर रिमेंबर एफआरएम इज नॉट द गोल्डन थिंग। यू हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट डोमेन नॉलेज, जो इंडस्ट्री को क्या चाहिए। अब एफआरएम में 99% चीजें इंडस्ट्री को चाहिए ही नहीं। तो ओके। आपको देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, और इंडस्ट्री के बाद आप टूल्स पे काम करो। एफआरएम आपको पाइथन नहीं सिखाता। तो दिस इज हाउ यू लैंड गुड रोल्स, एंड देन maybe your starting will be less, but as soon as you grow it will be quite comfortable salary. ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, राहुल। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे एंड दे वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, नॉट जस्ट
फ्रॉम आई मीन जो अभी बैंक में है, बट ऐसे भी लोग जो एस्पिरेंट्स हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के, तो वो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? या सो माय लिंक्डइन प्रोफाइल है I'll वो। share it in the description. या एंड उस पे And मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। okay, so all those who are aspirants and all those who are in the banking sector and public sector में अगर आप हैं और जॉब स्विच करना चाहते हैं टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, देन आई थिंक राहुल से आप कनेक्ट कर सकते हैं ओवर लिंक्डइन। मैं राहुल का प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच राहुल थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू वेरी मच। doing this conversation, because it's actually going to help a lot of people जिन जो अभी किसी ना किसी परेशानी में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। So thanks a lot, and looking forward to having another session with you in future. श्योर। So thanks a थैंक lot. यू। थैंक यू, बाय, थैंक यू।